नमस्कार मु डॉक्टर सुनील शर्मंगिया बेसिक इकोनॉमिक्स 1 वीडियो सीरीज रो आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो रे मु आपको स्वागत करछि। पिला माने आज वीडियो रे हमें पढिबा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द रिलेटेड कांसेप्ट। वीडियो टी स्टार्ट करबा आगे सेटा रिक्वेस्ट करछि वीडियो टी को जदी लाइक करन हंती लाइक कर दियंतु, चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु। चलो तो वीडियो टी स्टार्ट करबा। पिला माने जेमिति कि मु कहिछि हमें तीनटा कांसेप्ट पढिबा कोन कंज्यूमर सरप्लस, 3 नंबर रे प्रोड्यूसर सरप्लस, 3 नंबर आउ मु कोन पढिबा रिलेटेड कांसेप्ट गुड़ाक ठीक अच्छे। तीन टा विषय पढ़ा चलते आज आम कंज्यूमर सरप्लस रु स्टार्ट करवा। कंज्यूमर सरप्लस कौन? कंज्यूमर सरप्लस इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर। यहाँ निश्चित भाव में कंज्यूमर सहित रिलेटेड थी एंड द कंज्यूमर सहित रिलेटेड हेल्ले यहाँ कौटी आसो पे डिमांड रे आसो राइट। जिते भी आम कंज्यूमर सरप्लस पढ़ुचु आम डिमांड कथा चिंता करवा ठीक अच्छे। आउ जिते आम डिमांड कथा चिंता करें आम दुईटा प्राइस कथा चिंता कर ठीक अच्छे। विलिंगनेस प्राइस बा विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे और 2 नंबर विषय हम एक्चुअल पेमेंट राइट। एक्चुअल पेमेंट आम दुईटा विषय चिंता करें कौन विलिंगनेस टू पेमेंट और एक्चुअल पेमेंट। सी द कंज्यूमर सरप्लस कौन कहूँ कंज्यूमर सरप्लस इज द बेनिफिट बायर्स। बायर्स माने किए जे डिमांड करछि कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर सरप्लस इज द बेनिफिट बायर रिसीव व्हेन दे पे लेस देन व्हाट दे आर विलिंग टू पे फॉर अ गुड। तो कौन पिला माने आमर जते बेले विलिंगनेस टू पे थारु आमे कम पेमेंट करूचे आमे सेई जगह सरप्लस पाउचे। जेमिति कि विलिंगनेस टू पे माने कौन द मैक्सिमम अमाउंट अ बायर विलिंग टू पे फॉर ए गुड्स राइट। धरि निया जाऊ मु एठी गुटे एग्जांपल नेइची फॉर योर इंट्यूशन आमे बुझी परिबा पय गुटे एग्जांपल नेइची। इफ यू वर विलिंग टू पे 100 रुपीज केते टंका 100 रुपीज फॉर ए बुक बट गॉट इट फॉर 70 आमे 100 रुपीज विलिंगनेस टू पे अछि आउ एक्चुअल पेमेंट अछि 70 रुपीज। योर कंज्यूमर सरप्लस will be 30 rupees केमिति 100 minus 70 is equal to 30 बुझिएला। 100 is our willingness to pay, 70 is actual pay and this is the consumer surplus right। ठीक अच्छे आम कंज्यूमर सरप्लस पाई गले। यही कंज्यूमर सरप्लस को आम गोटे फॉर्मूला रे देखिबा। कंज्यूमर सरप्लस रो फॉर्मूला एठी आम लिखि देइछि। this is the consumer surplus. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट ऑफ द प्राइस पेड ठीक अच्छे। यहाँ को आम कंज्यूमर सरप्लस कहूँ। चलतु यही कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट को गोटे ग्राफ माध्यम देखा चेष्टा करवा। आम कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट को गोटे ग्राफ माध्यम देखा चेष्टा करवा। तो एक्स एक्सिस 0 दिस इज द वाई एक्सिस ठीक अच्छे। कंज्यूमर सरप्लस कौटी आइस पिला माने जेमिति कि मु कहिछि डिमांड रे आइस हमें डिमांड को देखिबा। कंज्यूमर सरप्लस देखला बेला हमें डिमांड को देखिबा। तो वी नीड अ डिमांड कर्व हियर the demand curve okay we got the demand curve. Let's suppose here is a consumer or there is some consumer in the market, they are willing to pay this much of price and the actual price is this is the price and accordingly the quantity in the market is Q1 and the price is P1 right. The consumer in the markets are willing to pay this much amount. Let's suppose this is the A right. This amount of quantity they want to pay OP willingness to pay कौन हम willingness to pay को आम WP कह दउछि। willingness to pay कौन हम OA ठीक अच्छे। एक्चुअल पे केते अच्छी पिला माने OP1 and this is the actual payment एठू OA होछि willingness to pay एंड यही जो बॉक्स रही गला ये बॉक्स को मैं शेडिंग कर दउछि। ये शेडिंग बॉक्स होछि इज द कंज्यूमर सरप्लस। या को हम कोन कहबा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस केते ही गला या को मु ई ना दे दउछि। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू AEP1 AEP1 ट्रायंगल केते को ट्रायंगल ए ट्रायंगल
ठीक अच्छे ये ट्रायंगल इज द कंज्यूमर सप्लाई नाउ सपोज आउ किसी कंज्यूमर मार्केट को एंटर कले सपोज इफ द प्राइस फॉल टू P1 ओके P1 रू प्राइस P2 को फॉल कला न्यू कंज्यूमर एंटर इनटू द मार्केट एंड क्वांटिटी बढ़ी गला Q2 बुझीला क्वांटिटी बढ़ी गला आउ प्राइस फॉल कला प्राइस फॉल करबा द्वारा कौन है इनिशियल कंज्यूमर जो थिले तांकर कंज्यूमर सरप्लस केते देला AEP1 ए रेड सेक्शन आ गोटे डिफरेंट कलर पेन मु नहीं जाउची सी ब्लैक पेन चूज कली ए जो सेक्शन आसी गला ए बॉक्स टा ए रेक्टेंगल टा जोटा जेते एरिया मु खाली सेलेक्ट करछि ए एरिया टा दिस एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस कौन यार ना दे दोची P1 P2 E एटा को आमे दे देबा B ए पॉइंट को B दे देबा ए पॉइंट को C दे देबा ठीक अछि P1 P2 B E additional consumer surplus to the existing বা old consumer additional consumer surplus to existing buyer existing buyers मान को ब्लैक सेक्शन टा कौन होची एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू प्राइस फॉल आ एई जो ट्रायंगल टा रही गला एई ट्रायंगल टा जो रही गला या को पूरा ब्लैकआउट कर दोची मु राइट पूरा ब्लैकआउट कर दोची दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस टू द न्यू कंज्यूमर कोटा ट्रायंगल एटी ट्रायंगल सिंबल दे दोची ट्रायंगल EBC EBC एटा होची कंज्यूमर सरप्लस टू द न्यू कंज्यूमर सरप्लस टू द न्यू कंज्यूमर माने कंज्यूमर सरप्लस बुझेला एठी हम कोन देखिले कंज्यूमर सरप्लस हमें ग्राफ माध्यम रे भी देखि देले ठीक अछि चलंतु हमें प्रोड्यूसर सरप्लस देखिबा प्रोड्यूसर सरप्लस कोन कहूची प्रोड्यूसर सरप्लस जेमिति कि ना कहूची हमें प्रोड्यूसर सरप्लस देखिबा को हेले हम कोन देखिबा को पड़िबो सप्लाई हमको सप्लाई देखिबा को पड़िबो सप्लाई रु प्रोड्यूसर सरप्लस आसीबो ठीक अछि डेफिनेशन कोन कहूची प्रोड्यूसर सरप्लस इज द बेनिफिट seller or the supplier receive when they sell at a higher price than their cost of production to बेसी रेट रे जदी बिकुछु तेबे आमे सेई जगह रु कंज्यूमर सरप्लस पाउछु ए जगह रे आमे दुईटा कांसेप्ट पाउचे फर्स्ट कांसेप्ट कोन पिला माने हमर होउची कॉस्ट आमे को कॉस्ट प्रोडक्शन करूचे द लोएस्ट प्राइस a seller willingness to accept the price cost होची द लोएस्ट प्राइस जोटा आमे एक्सेप्ट करूचे आमे एते हेबा कथा एंड दी नंबर जिंस होची द हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस प्रोड्यूसर सरप्लस में गोटे फार्मूला अछि कोन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू प्राइस रिसिप्ट माइनस द कॉस्ट चलते याको गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा हियर इज एन एग्जांपल इंट्यूशन if a producer willing to sell a good for 50 but sell it for 80 willing to sell माने कौन cost willing to sell माने कौन cost और sell it for 80 माने होची एटा होची हमर प्राइस रिसीव्ड राइट तो प्रोड्यूसर सरप्लस PS इज इक्वल टू कौन है जेबो प्राइस रिसीव्ड 80 रुपीस माइनस कॉस्ट 50 rupees which is equal to how much 30 rupees ए 30 rupees जो रहिला दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस चलंतु एई कांसेप्ट को ग्राफ माध्यम रे देखि देबा राइट x एक्सिस y एक्सिस 0 राइट सप्लाई कर्व केमति थिबो पिला माने एज यूजुअल हमें देखिबा अपर स्लोपिंग इज द सप्लाई कर्व SS बुझेला हमें इस कर्व को y एक्सिस रो ही टच करे कि नवा लेट्स सपोज दिस इज द प्राइस दिस इज व्हाट दिस इज द एक्चुअल प्राइस और द प्राइस रिसीव्ड P1 and this is the
क्वांटिटी अकॉर्डिंगली Q1 आम पाँच बट एक्चुअल प्राइस एटा हूँ P1 बट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एटा कौन या आम ई ना देदेबा एटा को आम ई ना देदेबा ये जो ट्रायंगल है CEP1 CP1E ट्रायंगल CP1E ये गोटे ट्रायंगल बनीगला ये ट्रायंगल को आम कौन कहूचे प्रोड्यूसर सरप्लस ये प्रोड्यूसर सरप्लस को मुझे हाइलाइटेड कर दूची बा डिफरेंट कलर टिके आम या मार्किंग करदेवा डिफरेंट कलर रे दिस द प्रोड्यूसर सरप्लस राइट यही एरिया को आम प्रोड्यूसर सरप्लस कहूचे सी आम या PS लिखी दूची एरो मार्क दे दूची दिस प्रोड्यूसर सरप्लस आसीगला ओके ना सपोज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई रे आम देखा प्राइस इंक्रीज कले कौन हम सप्लाई इंक्रीज करिवो लेट सपोज दिस इज द न्यू प्राइस एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द न्यू क्वांटिटी Q2 P2 राइट प्राइस बढ़ीगला यही जगह रे एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करिवो एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करिवो एटा गोटे पॉइंट ई देइचे या को आमे ना दे देबा बी या को आमे ना दे देबा सी बी सी ई तीनटा पॉइंट मिल गला ए जगह रे P1 E P P2 ए सेक्शन भी मिल गला ए सेक्शन को आमे कोन कहबा ए सेक्शन को सी कोन एटा होची रेक्टेंगल कोडा P1 P2 PE यही रेक्टेंगल को आम कौन कहबा पिला माने यही रेक्टेंगल को आम कहबा प्रोड्यूसर सरप्लस टू द एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर PS प्रोड्यूसर सरप्लस टू द existing प्रोड्यूसर और सेलर ठीक अच्छे एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स और सेलर पाई जो एक्स्ट्रा सरप्लस आम गेन करिचे ड्यू टू राइज इन प्राइस से जिनस होची P1 P2 BE राइट ये जो ट्रायंगल रहिला ताको गोटे डिफरेंट कलर मु चूज करूची लेट मी पिक द ब्लैक कलर हियर ब्लैक कलर रे मु सेलेक्ट कर दोची या को ए ब्लैक कलर को आमे कहूचे कोन एटा गोटे ट्रायंगल हे गला PCE इठी लिखि दोची ट्रायंगल PCE को आमे कोन कहबा न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस टू द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस टू न्यू सेलर और प्रोड्यूसर सरप्लस टू न्यू सेलर और द प्रोड्यूसर ठीक अच्छे या को आमे न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस बोली की कहबा लेट सपोज आहुरी प्राइस बढ़ी गला अकॉर्डिंगली थर्ड प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़िबो सेकंड प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़िबो एंड द एक्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़िबो ए जगह रो कंज्यूमर सरप्लस पढ़ी देले प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ी देले चलन तो टिके रिलेटेड कांसेप्ट पढ़ी देबा रिलेटेड कांसेप्ट गुडा कौन मार्केट एफिशिएंसी देखि देबा मार्केट एफिशिएंसी देखिबा को हेले हमको टोटल सरप्लस देखिबा को पड़िबो राइट टोटल सरप्लस कौन इन एनी मार्केट ट्रांजैक्शन बोथ बायर्स एंड सेलर गेन ऑब्वियसली मार्केट ट्रांजैक्शन रे बायर सेलर दी जण गेन करिवे द सम ऑफ देयर गेन इज कॉल्ड द टोटल सरप्लस दैट मींस टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस द प्रोड्यूसर सरप्लस राइट कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस चलतु या को आम गोटे ग्राफ देखा चेष्टा करवा राइट कंज्यूमर सरप्लस को और प्रोड्यूसर सरप्लस को आम ग्राफ रे देखा एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस एटा को कर्व डिमांड कर्व वेरी गुड एटा को कर्व सप्लाई कर्व वेरी गुड डिमांड कर्व सप्लाई कर्व पाई गले एटा को पॉइंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 इक्विलिब्रियम E पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस 1 ठीक अच्छे ये आम कौन पाइले लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट A
दिस इज अ पॉइंट बी। यही जगह इंटरेस्टिंगली आम कंज्यूमर सरप्लस पाचे, प्रोड्यूसर सरप्लस पाचे। प्रोड्यूसर सरप्लस कौ एरिया, कंज्यूमर सरप्लस कौ एरिया, ये जिन आमको बुझा पड़ो। फ्रॉम द प्राइस कौन, फ्रॉम द प्राइस, सी दिस इज द प्राइस, फ्रॉम द प्राइस आमको कौन करने को पड़ो, प्राइस रु ऊपर, above the price is the consumer surplus, below the price is the producer surplus। এই ট্রায়াঙ্গলটা কোডা, পি P1 PE, triangle P1 PE is equal to producer surplus। ঠিক আছে, triangle P1 AE, triangle P1 AE या को हम कौन कहबा, या कंज्यूमर सरप्लस कहबा, कंज्यूमर सरप्लस। जिते बेले एई दी ट्रायंगल मिसी जिवे, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मिसी जिवे, हम कौन पाइबा, टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस माने कौन, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक अच्छे, टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कौन हो ट्रायंगल ए बी ई। टोटल सरप्लस कौन होगा, टोटल सरप्लस इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी ई, कोडा ए टोटल एरिया। लेट मी पिक द डिफरेंट कलर एंड मेक इट द कलरिंग। येलो कलर करदेली और प्रोड्यूसर सरप्लस को आम गोटे कलर देदेली। ठीक अच्छे, प्रोड्यूसर सरप्लस गोटे अलग कलर हो गला। दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक अच्छे, ओके, कंज्यूमर सरप्लस पाइगले, प्रोड्यूसर सरप्लस पाइगले। टोटल सरप्लस कौन, टोटल सरप्लस इज इक्वल टू CS प्लस PS, जोटा कि आम ये जगह नहीं ABE ट्रायंगलटा। ओके, मार्केट एफिशिएंसी देखीदे, चलते मार्केट इनएफिशिएंसी देखीदेबा। चलते आम देखा चेष्टा करवा इनएफिशिएंसी एंड द डेडवुड लॉस। मार्केट इनएफिशिएंसी जितेबाला होची पिला माने आम डेडवुड लॉस कथा चिंता करछे। डेडवुड लॉस कौन मुझे कहूची, बट द मार्केट इनएफिशिएंसी कौन पिला माने, मार्केट इनएफिशिएंसी होची अदर देन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को छाड़ी की बाकी सब कांसेप्ट। इफ द मार्केट आर नॉट अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, मार्केट जितेबाला इक्विलिब्रियम को आसीबो नाही ड्यू टू प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल हवा द्वारा, प्राइस केमिति कंट्रोल हबो, प्राइस कंट्रोल हबो ड्यू टू सेलिंग एंड फ्लो और टैक्सेस। लेट्स सपोज सेलिंग माने कौन, सेलिंग माने कौन, द अपर प्राइस। ओके, एंड सेलिंग माने होची अपर प्राइस, फ्लोर माने कौन, फ्लोर माने होची लोअर प्राइस। आउ टैक्स जेमिति कि GST लगी, जेमिति कि फर्स्ट सीन गुड, सीन गुड माने कौन, सिगारेट, तंबाकू, अल्कोहल, ए सब जिनस आमर कौन लगी 40% टैक्स लगी, राइट, 40% टैक्स लगी। प्राइस कंट्रोल हो सब जिन प्राइस कंट्रोल हम ड्यू टू टैक्सेसन। आमर सीलिंग लगी पारे, फ्लोर लगी पारे, गवर्नमेंट जहाँ भी डिसाइड कले। फ्लोर माने कौन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मन अच्छी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दौरान यार तले केबे भी कहीं बिकी पारे ना। तो दिस इज द फ्लोर कॉन्सेप्ट। सेलिंग माने कौन, अपर प्राइस, या ऊपर तुम सेल कर पारबनी। मार्केट आर कंट्रोल्ड बाय द सेलिंग, मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लोर। मार्केट प्राइस, सेलिंग और फ्लोर। लेट्स सपोज दिस इज द सेलिंग एंड दिस इज द फ्लोर। प्राइस यार तलक को जाई पारिबो नाही, प्राइस यार ऊपर को जाई पारिबो नाही। दिस इज द सेलिंग एंड दिस इज द फ्लोर। चलो तो यही कॉन्सेप्ट को लेकिन आम अंडरस्टैंड करने चेष्टा करवा इनएफिशिएंसी केमिति होउची और डेडवुड लॉस केमिति आउची। डेडवुड लॉस माने कौन पिला माने, डेडवुड लॉस होउची लॉस ऑफ वेलफेयर, एटा वेलफेयर लॉस। ट्रेड्स दैट वुड हैव बेनिफिटेड बोथ बायर्स एंड सेलर बट नो लॉन्गर अकर्स। जो ट्रेड रे बायर्स और सेलर दी जण बेनिफिटेड होवा कथा सेथिरे से माने बेनिफिटेड हो नाहंती। द लॉस ऑफ सरप्लस टू द प्रोड्यूसर एंड द लॉस ऑफ सरप्लस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दुई जन कर लॉस हम X 0 Y।
आम सीलिंग एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट दुटा को देखा चेष्टा करवा। सी दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व एंड अकॉर्डिंगली आम ये जगह कौन पाचे Q1 quantity, this is the equilibrium and this is our Q1 price. Okay, and this is what the ceiling price. Price would not be higher than this. Okay, ceiling price is higher than the market price. This is the market price. Market price ऊपर ceiling price अच्छी बुझेगा। मार्केट प्राइस या ऊपर जाई परिबो नाही। एई जगह कौन होची दिस इज द डिमांड एंड द सप्लाई। सप्लाई 80 टच होची एकली क्वांटिटी कमी जाउची Q2 राइट। सी हम सरप्लस कथा चिंता करछे। लेट मी पिक द डिफरेंट कलर हियर। ब्लैक कलर नेली ठीक अछि। दिस इज आमे एई एरिया कथा चिंता करबा। एई एरिया कथा तो ब्लैक कलर रे शेडिंग कली एई एरिया कथा आमे चिंता याको ना दे दोची ए ठीक अछि बी सी डी स्मॉल ई ठीक अछि ए बी सी पी वन এটা কোন যেটা ব্ল্যাক কলি এটা গোটে রেক্টাঙ্গল হয়ে গলা এ বি সি এটা কোন কনজ্ୟୁମର ସରଫ ଆଉ গোটে রেক্টাঙ্গল হচ্ছে এইটি এটাকে মু লাইন ড্র করে দଉଛି এই লাইন ড্র কলা এরিয়াটা কোন হয়ে যাଉଛି পিলা মানে এটা भी গোটে রেক্টাঙ্গল হয়ে গলা এই রেক্টাঙ্গল কোন P1 এটাকে আমি সি না নেইছি পিলা মানে মনে রাখি দাও সি P1 সি ডি স্মল ই ডি এটা হচ্ছে প্রোডিউসর সারপ্লাস। এই যে এরিয়া রহিগলা লেট মি পিক দ ডিফরেন্ট কলর টু ডেমনস্ট্রেট ইউ দিস ইজ দ লস অফ द प्रोड्यूसर सरप्लस। এই এরিয়া দিস ইজ द উপরে যে এরিয়া হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গলটা হচ্ছে এই এরিয়া को टोटल हमें डेड वेट लॉस कहूचे। এই এরিয়া को हमें डेड वेट लॉस ঠিক আছে। এই डेड वेट लॉस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस रु आइछ। तापर हमें फ्लोर प्राइस देखिबा। फ्लोर प्राइस रे भी एक्जेक्टली सेम वे रे काम करिवो। डेड वेट लॉस इज इक्वल टू बी डी ई डेड वेट लॉस ठीक अच्छे डी डब्ल्यू एल इज इक्वल टू कौन पी डी ई ट्रायंगल या को आम कौन कहूचे डेड वेट लॉस कहू ठीक अच्छे। डेड वेट लॉस माने कौन पिला माने जो ट्रेड रे बोथ बायर्स और सेलर बेनिफिट हेबा कथा ड्यू टू सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे। सेलिंग प्राइस ड्यू टू सेलिंग प्राइस सीपी सेलिंग प्राइस रहिबा द्वारा कौन है मार्केट रे डेड वेट लॉस आउची किछिटा लॉस आउची जो लॉस बोथ द बायर्स एंड सेलर सफर हो राइट दिन को पॉकेट रो जाउची नहले दी जण किछि ना किछि एक्स्ट्रा सरप्लस पाई थान। एक्जेक्टली सेम कांसेप्ट को एथे हम देखिबा पय चेष्टा करबा विथ द हेल्प ऑफ फ्लोर प्राइस x हे गला y हे गला 0 द डिमांड कर्व द सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम प्राइस and this is the floor price. This is the floor price. It has P1, 1, equilibrium, and this is the A. 80 लगे दबा सी ठीक अच्छे। अकॉर्डिंगली ये जगार डिमांड 80 आसो आम क्वांटिटी कुछ कमे दबा कौन Q2 बुझेगा ये जोटा आउची कौन पिला माने एटा एटा हूँ फ्लोर प्राइस फ्रॉम द फ्लोर प्राइस टू दिस वन ये एरिया टोटल ये टोटल एरिया हूँ कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर यही एरिया हूँ सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस एंड लेट मी पिक द डिफरेंट कलर रेड कलर पिक करुच्ची ये ट्रायंगलटा हूँ ये ट्रायंगलटा मुझे ना दे दूसरी डिफरेंट ना हो पारे ये ट्रायंगलटा हूँ डेड वेट लॉस
এইটা আমি ডেডওয়েট লস কହୁଛି ঠিক আছে আমি কোন পাইছে ডেডওয়েট লস পাই গলে রাইট फ्लोर प्राइस अकॉर्डिंगली टैक्सेशन भी काम करिबा टैक्स लगे कि हम प्राइस फ्लोर नहीं आसीबा ठीक अछि तो दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट 1 एटा होछि यूनिट 1 रो एंड पिला माने हम यूनिट 1 कंप्लीट करि सारिछे जदि मु किछि सेक्शन छाड़ी देछि फ्रॉम द यूनिट 1 निश्चित भाबरे कमेंट करिके जणाई दियंतु जोटा कि मु चेष्टा करिबि से ऊपर क्लियर करिबा पई हमें नेक्स्ट क्लास रो यूनिट 2 स्टार्ट करिबा पिला माने ठीक अछि थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड वीडियो जदि भल लागि छै पिला माने वीडियो को लाइक कर दियंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और हां सांग मान के सहित वीडियो को शेयर करबा भूलंतु नहीं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो until then keep learning keep growing